diagram or map labeling. Okay, so in which the things to remember is that first of all you should focus on the instructions. So instructions are the key. I mean, whenever they talk about this kind of application and this kind of activity, they may give you a plan like this. For example, this is what, just focus on that, it is town library. Okay, and this is the map, and you all are supposed to listen to the audio carefully, whatever they are talking, and from this list you would fill the given blanks. That first of all, this is very important word, it is town library. So whatever it would be related to library. तो ये बेटे लिसनिंग का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ऑडियो सुनवाई जाएगी, ऑडियो से सुनकर आपने दिए गए मैप को समझना है, और अल्फाज के साथ साथ जब आप ख़ास तौर पे इसमें डायरेक्शंस को फोकस करेंगे तो आपके लिए बेटे याद रखना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो उसमें आपने कुछ वर्ड्स हैं जिनको फोकस करना है, एंड दे वुड हेल्प यू टू fulfill the requirement in this question. Okay, so as you know that there are some basic things that you should remember, and we have already discussed that there would be synonyms. They might not be repeating the same words that were in the audio would be the same in your paper, but the heart of this key question is that if you memorize this map vocabulary, okay, it would become rather easier for you to understand this activity. Okay, so first of all we would just discuss these directions, and if you know the meaning of these directions, obviously it would become easy for you people to memorize that. Okay, so Ali, would you try to read that, what it is? Bottom. Okay, so if some word is new for you, feel free to ask me. Next, just keep on reading. On the far side. Far side के far का मतलब बेटे क्या होता है? दूर. ठीक है, वो देखें, वो मेरे सामने वो चेयर एंड पे बैठी हुई है. यहाँ उमर को हम ये कह देते हैं कि उमर इज सिटिंग ऑन द फार साइड ऑफ द टेबल. ठीक है, ये देखें, अभी लोकेशन की तरफ बेटे देखें, मसलन ये अली है और वो है उमर. अगर मैं अली के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, अली इज सिटिंग ऑन द नियर साइड ऑफ द टेबल. ठीक, अब आप उमर की बात हो रही है तो मैं कहूँगा यहाँ काजम उमर इज सिटिंग ऑन द फार साइड ऑफ द टेबल. यहाँ पर आपने पोजीशन और लोकेशन को फोकस लाजमी करना है कि जो वो पोजीशन आपको बता रहा है उस पोजीशन के हिसाब से आपने देखने की कोशिश करनी है. फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है ना, इस लोकेशन यहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ से देखना है फार साइड है, नियर साइड है, या क्या है. मसलन इस बंदा है तो इसकी फार साइड तो ये भी बन जाती है ना. ठीक है, तो कहने की बात है कि इस बंदे के इस पोजीशन के हिसाब से आपने चीज़ों को बेटा देखने की कोशिश करनी है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. हाँ जी, तो ये डायरेक्शंस तो आपको बेटे आती हैं. यहाँ पर आपने क्या फोकस करना है कि लिसनिंग के अंदर जो आपको वो डायरेक्शन बताएगा उसका मकसद होगा इसकी, यानी वो ईस्ट कहता है तो यहाँ पे वो नक्शा बना देगा कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है या साउथ इधर है. तो आपने इस बंदे के लिहाज से देखना है कि उसका, इस बंदे का नॉर्थ किधर है, इधर है, साउथ किधर है. ठीक है, तो डायरेक्शन जो है इसमें अपने ऑडियो के हिसाब से इसको बेटा फोकस करने की कोशिश करनी है. कहाँ गया? यस जी, बिटवीन. इसमें बेटे इफ देयर इज एनी वर्ड न्यू फॉर यू तो वो आपने पूछ लेना है. बिटवीन आप जानते हैं क्या, दरमियान में. नेक्स्ट, फेसिंग, आमने सामने. बेटे टू द नॉर्थ, टू द वेस्ट. टू द वेस्ट और टू द नॉर्थ का क्या मतलब है? मसलन मिसाल के तौर पर अगर हम किसी डायरेक्शन को बता रहे हैं तो आप उसमें दो डायरेक्शंस भी बता सकते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर
टू द नॉर्थ ऑफ माई राइट साइड इज मुजाहिद सिटिंग। ठीक है, तो अब मेरी है राइट साइड की जो नॉर्थ बनती है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको ये बता सकते हैं। तो जो आप बता रहे हैं उसके लिहाज से आपने ये बताने की कोशिश करनी है कि वो मशरिक में है या मगरिब में है। ठीक है, जैसे हम राइट या लेफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, स्लाइटली का मतलब वो क्या होता है? मामूली सा, थोड़ा सा मगरिबी जानिब, थोड़ा सा मगरिबी जानिब। जी, हेडिंग यानी जिसका रुख किस तरफ है? मशरिक की तरफ। जस्ट साउथ ईस्ट। अगर मैं ये आप इस इन चार कोनों को समझ लें, ये ईस्ट है, ये सॉरी ये फर्ज करें वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट। ठीक है, अब आपने पहले तो ये अंदाज़ा लगाना है, ये ईस्ट था और ये क्या था? साउथ था। तो साउथ से ईस्ट की जानब, यानी अगर कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद है तो मैं क्या कहूँगा? साउथ ईस्ट। अगर हम के इधर से इधर को आए तो ये चीज़ आपको मिलेगी। एक मिनट अजान सुन लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें, ओके बेटा, पढ़ें इसको यहाँ से। इन द मिडल ऑफ द सेंटर, तो ये आसान से वर्ड। अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब क्या है? ये भी आमने सामने को कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट। जंक्शन, जंक्शन क्या? जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जॉइनिंग ऑन द जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, मिलाप। डेड एंड, डेड एंड का मतलब है जहाँ से आगे रास्ता कोई ना हो। बंद गली को क्या कहेंगे? डेड एंड। अगर रास्ता, अगर आप किसी गली में एंटर होते हैं, आगे से वो बंद है, तो आप कहेंगे ऑन द डेड एंड, यानी बिल्कुल उसकी नुक्कड़ पे, जहाँ पर वो गली बंद हो रही है या ख़त्म हो रही है। लीड्स ऑफ, लीड्स ऑफ का मतलब है वो रास्ता खुला है, रहनुमाई करता है, जिस तरफ लेकर जाता है। जैसे मैं ये कहूँ ना, समुंदरी रोड है, तो वो दैट इट लीड्स टू समुंदरी। जंग रोड लीड्स टू जंग, लेकर जाना। और इसमें तो नहीं मुश्किल बात कोई। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यू नो दैट। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप जानते हैं जिस तरह से क्लॉक घूमता है, और उसके ऑपोजिट। ठीक है, अगले पढ़ वाली। अ लिटिल बियॉन्ड, बियॉन्ड कहते हैं दूर, थोड़ा सा दूर। जी, जस्ट पास्ट, हल्का सा गुजर के अगर आप जाएं, थोड़ा सा आगे। जस्ट पास यानी बिल्कुल बड़ा आगे। नेक्स्ट,
बिफोर यू गेट इट, यानी पहले, वहां पर पहुंचने से पहले। जी। एडजॉइनिंग, इसका मतलब भी वही वाला था जो उसका था, जंक्शन वाला था। अब एंटर वाया, वाया क्या मतलब, के जरिए, ठीक है, जो एक रास्ता दूसरे की तरफ आपको ले जाता हो। जैसे हम, हाउ डू यू एंटर एकेडमी, वाया डोर। सो वी एंटर एकेडमी वाया डोर, दरवाजे के जरिए दाखिल होते हैं ना। नेक्स्ट है रन्स अलोंग साइड, क्या मतलब, साथ साथ बहता है। नेक्स्ट टू, बिल्कुल साथ। जैसे मसलन आप दोनों, काजिम और उमर साथ साथ बैठे हैं, हम कहेंगे काजिम इज सिटिंग नेक्स्ट टू उमर, या उमर इज सिटिंग नेक्स्ट टू काजिम, तो साथ साथ इसका मतलब है। नेक्स्ट क्या होगा, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, पास थ्रू, या जानते गुजर जाना, ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पर। बियॉन्ड का मतलब क्या है, दूर। अलोंग का मतलब क्या है बेटे, साथ साथ। कॉर्नर आप जानते हैं, गो स्ट्रेट का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। अब इन चीज़ों को बेटे जहन में रखते हुए, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड दैट वी वुड solve this activity, ठीक है। I am going to play the audio and you are supposed to listen the audio carefully. Just write down counting from 11 to 15 on your registers and put your pencils in your hands and try to listen to the audio and try to solve it, ठीक है। इसको बेटा सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी है। The entrance to the town library. जी बच्चों, आर यू रेडी? नहीं, अभी मैंने चलाई ही नहीं, मैं ये आपको कहने लगा हूँ, आर यू रेडी? 11 to 15 वर्ड लिख लिया ना, काउंटिंग, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो एंड यू आर सपोज टू राइट द आंसर्स। अब ये देख लें, इसमें ऑप्शंस क्लियर हैं, पिक्चर में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। इनमें अहम चीज़ जो है वो क्या है पढ़ने वाली, वो ऊपर है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये इसको ज़रा गौर से पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि मैं फिर इसको कर दूँ। चूज़ 5 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी ये जो बॉक्स दिया गया इसमें से 5 आंसर, एंड राइट द करेक्ट लेटर्स ए टू आई, ये ए से लेकर आई तक। तो यहाँ पर जो खाली जगह है 11 में ए भी आ सकता है, बी भी, ए से लेकर आई तक कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर है बात? सो लेट्स मूव ऑन। शुड आई प्ले द ऑडियो? ओके, लेट्स सी। एक मिनट। Okay, everyone. So, here we are at the... You will hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left,
and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. And that's about it. Oh, there's also the library office on the left of the librarian's desk. Okay. Now, does anyone have any questions? Okay, I mean, you may check your answers. चेक कर लें इसको आंसर. ओके, ठीक है सर. वेरी गुड. ठीक है, चलें. ठीक हो गया. दो गलत हैं, कुछ ठीक भी हैं ना. हाफ हाफ ठीक है. अच्छा, आपने देखा होगा बेटे, इफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस vocabulary. I mean, the most important thing was the vocabulary, that if you understand those basic words and try to follow the audio, so it would become rather easy for you. I'm going to replay the audio, so you have to keep pace with the transcript and try to focus on the words that could be helpful when you are fulfilling and completing that activity. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town.